अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
Assalamu alaikum, everyone. We are just starting in 5 minutes.
Assalamu alaikum. Respected speakers and guests, welcome to Emperor Board Nights of Diabetes, an expert speaker program organized by Farmivo. My name is Naveed Ahmed, and I am honored today to be hosting this event of such an esteemed gathering. Before we start, let's hear a few verses from the Holy Quran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। आप फरमा दीजिए, ए काफिरो, मैं उन बुतों की इबादत नहीं करता जिन्हें तुम पूजते हो, और न तुम उस रब की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। और ना ही मैं आइंदा कभी उनकी इबादत करने वाला हूँ जिन बुतों की तुम परस्तिश करते हो। और ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिस रब की मैं इबादत करता हूँ। सो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए है। Please stand for the national anthem. Thank you. I request you all to please follow COVID-19 SOPs and keep your masks on throughout the session. Farmivo started its journey in 1999 with its vision, our dream, a healthier society. Our passion, creativity, and innovation has driven us continuously to bring unsurpassed medical advances to the healthcare community at large. The name of this event, Emperor Board Nights of Diabetes, sets you, the speaker, as Emperor Board and the audience as Nights of Diabetes, the champions of the patients when it comes to taking the decisions in defending them against the epidemic known as diabetes. The advancements in the research of diabetes has led to the discovery of the SGLT2 inhibitors, and especially Empagliflozin. So where do we stand amongst all of this? Please welcome our first speaker to share his findings, Dr. Khalid Mahmood Khan. Dr. Khalid is an MBBS, MRCP, and FCPS, and he is currently working in the esteemed Jinnah Hospital as a professor of medicine. Please welcome him on the stage.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear colleague, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss diabetes. As you all know, nowadays we are living with this epidemic of COVID-19. इसके साथ साथ another epidemic of diabetes. And in reference to 14 अगस्त हम सब ने इस झंडे को संभाल के रखना है. जैसे मैं बात कर रहा था कि इस वक्त वी आर डीलिंग विद एपिडेमिक ऑफ कोविड-19 एंड एट द सेम टाइम यू हैव एन एपिडेमिक ऑफ डायबिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. और उसमें अगर आप देखें तो वी आर लिविंग इन अ रीजन जहां पे प्रेवलेंस इज हाईएस्ट वन. 1 in 11 adult they have diabetes or pre-diabetes. 1 in 2 adult with diabetes they are undiagnosed. जब हम प्री डायबिटीज की बात करते हैं तो मोर देन 86 मिलियन, ये डाटा 2015 का है. अब ये नंबर हैज इंक्रीज्ड एंड 9 out of 10 people they don't know that they have underlying pre-diabetes. तो जूनियर कोलीग खड़े हैं, बैठे हैं सारे, तो उसमें आप ये बात ज़हन में रखें कि प्री डायबिटीज के लिए हमारे पास रेफरेंस क्या है. अगर हम HbA1c की बात करते हैं जी, हीमोग्लोबिन A1c बेटे कितने से कितने तक होगी? शाबाश, 5.7 to 6.4 to be precise, and more than 6.5 is the diabetes. Then अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो we have number around 19.4 million people, और ये नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है. 1 in every 6 adult deal with diabetes over the age of 20. और उस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारी पॉपुलेशन के एक लार्ज बर्डन जो है हम डायबिटीज के साथ शेयर कर रहे हैं. सो 1 new case every 3 seconds, 1 death every 6 seconds, 1 limb loss every 20 seconds, and 5 million death in 2015. जैसे शुरू में मैंने बात की कि we are living with diabetes and it's a serious threat that neither respect socio-economic status nor national boundary. कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इससे बच गया है, बल्कि नंबर इज इंक्रीजिंग एंड every country is facing the more or less similar problem except few countries जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नंबर को ड्रामेटिकली रिड्यूस किया है. एंड प्रेवलेंस इज हाई ग्लोबली. मेन रीजन क्या है? पुअर डाइट, ओबेसिटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, और नंबर ग्रोइंग डे बाय डे. और मेन रीजन क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल. ये मैं पहले भी हमेशा ये बात करता हूं कि अगर आप सैर करने को दिल नहीं करता तो आप एक अच्छा सा पेट पाल लें, कुत्ता रख लें. दो हमारे रिलीजन के लिहाज से बिट कुछ लोग इससे डेविएट करेंगे, लेकिन उसका फायदा क्या है कि आप उसको वॉक कराने चले जाएंगे. जब आप उसको वॉक कराएंगे इसी बहाने आपकी वॉक हो जाएगी. और उस पर मैं एक वाकया हमेशा शेयर करता हूं कि आज से तकरीबन 21 साल पहले एक वन फाइन मॉर्निंग वी वर एट द एज ऑफ आयरलैंड और इंग्लैंड के एज पे एक शहर है न्यूरी, जहां से टाइटैनिक जहाज ने अपना सफर स्टार्ट किया था. तो उसके एक साइड पे हम खड़े थे तो हमें लगा दूसरी साइड पे ऐसे है जैसे परियों का देश है.
तो एक इंसानी फितरत है कि हमने कहा कि उधर जाना चाहिए, बट बीच में समुंदर था। तो हमने कोई आधा घंटा ड्राइव करने, तो हमने एक जगह देखा कि एक गोरी जा रही थी, एंड शी वाज, उसकी स्पीड भी अच्छी खासी, ब्रिस्क वॉक कर रही थी, साथ उसका डॉग था। तो हम हंस के, ऐसे ही जैसे होता है शुक्र मेले में, तो हमने कहा कि ये कुत्ते को सजा मिली हुई है। अच्छा खैर, हम आगे न्यूरी चले गए। वहां पे हमने बीच साइड पे, वो बड़ा अच्छा खूबसूरत शहर था। करीब जब गए तो वो दूर के डोल साने, वो वैसे ही था जैसे आम शहर होते हैं। लेकिन हमने वहां कोई आधा घंटा सैर की और फिर दोबारा अपनी गाड़ी पे बैठे। जब वापस आए तो यकीन मानिए कि अगेन मोहतरमा उसी स्पीड से वॉक कर रही थी और कुत्ते का भी वही हाल था। तो कहने का मकसद ये नहीं, अब हमने क्या है कि इधर डॉग तो ले लिया है, लेकिन हम गाड़ी में बैठ गए तो वो हमने उसको लाइफस्टाइल को छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं अपने लिहाज से बात करूंगा। हमारा जो पेशेंट है, स्पेशली हमारी फीमेल पॉपुलेशन जो है, वो आते ही पहला जुमला ये कहती है, डॉक्टर साहब आई एम हैविंग पेन इन माई लेग्स, मेरी टांगों में दर्द है, मैं वॉक नहीं कर सकती। तो आपका अगला सवाल ये होना चाहिए, आप नमाज पढ़ते हैं तो याद रखिए कि हमारी मिडिल एज खवातीन मर्दों की निस्बत रिलीजन की तरफ ज्यादा मूव है। तो जब आप कहते हैं जी डॉक्टर साहब, तो मैं कहा फिर आप तस्बीह भी करती हूँ? जी मैं बिल्कुल करती हूँ। तो मैंने कहा आपने फिर तीसरे कलमे की तस्बीह करनी है, और उसको कैसे करना है? आपने तीसरा कलमा जब आप पढ़ते हैं, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, तो जब आप ये बात करते हैं, कभी आपने ये पैदल चलते हुए एक पूरी तस्बीह करनी है। अब इस पे पेशेंट कर लेते हैं, तो ये आपने अपने पेशेंट को वो उसके जो उसके दिमाग में सोचा उसके मुताबिक डालना है। तो ये एक छोटी सी सजेशन है कि अगर कोई पेशेंट सीधे रास्ते नहीं चलता या उल्टे रास्ते नहीं चलता, तो आप उसको उसके एटमॉस्फेयर के लिहाज से उसे बेशक कहें कि अपने टीवी लॉन में थोड़ा थोड़ा चले, तो वो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में करेगी। मैकेलरीज हैज इंक्रीज साइज। लाहौर में अगर आप सबको याद हो, बल्कि नहीं, इधर तो सारे यंगर लोग हैं, शायद आपकी उस वक्त पैदाइश हुई हो, पहला मैकडोनल्ड किसी को याद है कब आया? जी नो, इट वाज 94-5। ठीक है, तो जब पहली दफा वो बर्गर खाया तो उसका भी मजा नहीं आया था। तो अलबत्ता मिल्क शेक वाज टेस्टी वन। तो लेकिन अगर आप देखें, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो चिप्स साइज था पहले छोटा था, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया, इसी तरह हमारी बोतल का साइज भी बड़ा हो गया। तो हमारा जो भी यंग जनरेशन जा रही है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वहां से मिलती है, दैट लीड टू ओबेसिटी। और 85.2% of the people with type 2 diabetes, they are either obese or overweight. Then we are either couch potato. काउच पोटैटो समझते हो? जब मैं छोटा था तो हमारे घरों में एरियल लगा होता था, बच्चे की ड्यूटी होती थी, चल भी ऊपर छत पे चढ़ जा। तो वो चित्रहार प्रोग्राम, सिर्फ 2 चैनल आते होते थे, पीटीवी एंड चित्र। तो वो ऊपर जाके बच्चे का काम होता था, उसने एरियल घुमाना है, ठीक है इधर आ गया, गाना लग गया, देख। तो घर वालों को ईच टाइम वो बड़ा सा टीवी साइज था, जो बड़ा सा, ठीक है। तो कई दफा उसको जूते मार के भी उसकी स्क्रीन साफ की जाती थी। तो उसके ऊपर चैनल देखते थे। ईच टाइम अगर आपने चैनल चेंज करना है, इंडिया या पीटीवी, तो आपको उठ के जाना पड़ता था। अब क्या, वी हैव माउस एंड बेड पे लेटे लेटे, देन वी हैव दिस कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के ऊपर भी हम अब बैठे रहते हैं। एट दैट टाइम एक और चीज थी, हर बच्चे के पास वो अपने टैली के दरख्त से एक हाकी बनाता था, ग्राउंड में जाता था। अब हम बच्चों को बाहर नहीं जाने देते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। देन अगेन चिप साइज भी बढ़ गया है। खाना मजेदार हो तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो बढ़ जाता है। देन ऑल दीज लीड टू ओबेसिटी। तो ये जैसे मैंने पहले बात की कि साइज has been increased and that is increasing the prevalence of diabetes. This is important. Up to 50% बीटा सेल लॉस हो चुका होता है जब पेशेंट
कोई डायबिटीज जिस वक्त उसको पता चलता है कि मुझे तो शुगर का मर्ज हो गया है, उस वक्त तक 50% डैमेज already has been. Over time, poorly managed diabetes can damage the cell ability to hold together, causing serious problem. अब वो serious problem क्या हो सकते हैं? वो related with blindness, cataract, CKD, limb amputation, stroke, coronary artery disease, peripheral vascular disease. So ये सारे problem जो है, they are related. So diabetes, और आप सब के लिए एक humble suggestion है कि आप सब में कुछ part 2 के student होंगे. So diabetes और hypertension जब part 2 में आ जाता है सबसे मुश्किल केस होता है, because they involve each and every system. So इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है. अभी मैं बात शुरू में की थी कि कोविड की बात की, तो it has been seen कि those people who are having good diabetic control, glycemic control जिनका अच्छा है, उनमें survival is 98.9%. So more or less similar to general population. But once control is poor, then mortality is around 11%. So ये हमने good glycemic control is very important. Then ये एक और slide है with Sadia's permission कि जब हमारी hemoglobin A1C थोड़ी होती है या around 7 होती है, तो 30% जो है वो fasting count करती है and 70% is postprandial. But जैसे जैसे HbA1c बढ़ती जाती है, तो आप देखें जो फास्टिंग शुगर है उसका लेवल बढ़ता जाता है और पोस्ट प्रेंडियल का कम होता जाता है. सो फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज वी हैव टू कंट्रोल बोथ ऑफ दीज पोस्ट प्रेंडियल एज वेल एज फास्टिंग ब्लड शुगर. अभी मैं बात कर रहा था कि ये कॉम्प्लिकेशंस जो अभी हमने बात की, सो अगर हम जो मेजर ट्रायल हुआ दैट वाज यूकेपीडिया, उसमें क्या था कि इफ यू रिड्यूस और कट योर हीमोग्लोबिन A1C by 1%, you can reduce diabetes related death by 21%. Similarly, microvascular complication, for example CKD, blindness or peripheral vascular disease, they can be reduced up to 37%. And 19% reduction in cataract surgery, heart attack by 14%, and 43% limb amputation or peripheral vascular disease, and stroke incidence by 12%. ये बिल्कुल वाइस वर्सा है कि अगर एक 1% A1C बढ़ती है तो कितनी कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल उसके उलट ये. सो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैंने इसलिए वो लाइफस्टाइल के ऊपर बात कर रहा था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोथ फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और फॉर एनी अदर डिजीज. एंड देन कंट्रोल ऑफ ग्लाइसीमिया. अब उसमें हाइपरग्लाइसीमिया स्पेशली इन प्री डायबिटीज एज वेल एज इन फ्रैंक डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज. इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रिवेंशन एंड डिले ऑफ कॉम्प्लिकेशन. जैसे अभी हमने बात की कि 1% रिडक्शन करते हैं तो हम कितनी कॉम्प्लिकेशन कम कर सकते हैं. अब जब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, तो प्लीज हैव अ गुड स्लीप. आजकल हमारे ये जो बुराई हम सबके साथ शामिल हो गई, रात को ये सोने नहीं देती और हम उस खातून या मर्द को मैसेज कर रहे होते हैं, उस पे कमेंट कर रहे हैं फैबुलस, वेरी गुड, एक्सीलेंट. जब वो सामने आता तो हम उससे दुआ सलाम भी नहीं लेते. So this is nothing. So have a please 6 to 8 hours good sleep, stop smoking, and then stop alcohol. Then healthy diet जिसमें आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए और उसमें आपने रिफाइंड शुगर को ओमिट करना है, स्पेशली रिफाइंड शुगर को ओमिट करना है. एंड एक्सरसाइज. अब याद रहे कि ये हम डायबिटीज में भी कहते हैं, हाइपरटेंशन में भी, मिनिमम 30 to 35 और 45 मिनट ब्रिस्क वॉक डेली और 150 मिनट पर वीक.
और उसमें भी 2 से 3 दफा स्टनस कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जिसमें आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़े। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, दे फेवर कि इफ यू हैव एस्टेब्लिश्ड एथ्रोवेस्कुलर डिजीज और सीकेडी, प्लीज बिगिन विद GLP-1 एनालॉग और sodium glucose co-transport inhibitors until unless if there is some contraindication. So ये आपने ये latest जितनी भी guideline है, then if not controlled, then you can add other drugs. And remember, compelling need to maintaining good glycemic control, उसमें आप you can use any of these group, whether DDP4 inhibitors है, GLP-1 analog है, sodium glucose co-transport inhibitors है, thiazolidine group जो है वो है। So ये आपने इसके साथ साथ इंसुलिन जो है that is the mainstay of treatment. Sometime अगर GLP-1 analog, क्योंकि GLP-1 analog wonderful drug, but at the same time जो सबसे, डॉक्टर सादिया इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगी कि सबसे जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या है, साइड इफेक्ट। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ए दवाई नहीं मैं खानी, मैं भावे मार जाऊं, क्योंकि इतनी सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन जब उसको एक दफा शुरू हो जाती है, दो वी स्टार्ट कुछ पेशेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम टॉलरेट कर लेते हैं, बट 50% जो उसमें ओमिशन होती है जो पेशेंट छोड़ देता है, रीजन बिहाइंड साइड इफेक्ट। सो बेसल इंसुलिन की बात है या सल्फोनाइल बेसल इंसुलिन स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर जो पोस्ट प्रेंडियल एज वेल एज फास्टिंग। सो फास्टिंग जो कि जैसे जैसे शुगर बढ़ती जाती है तो वो क्या होता है आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर, तो उसके लिए बेसल का, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप बात करते हैं एनपीएच की तो उसका कितने घंटे है उसकी हाफ लाइफ, 18 से मैक्सिमम 24 घंटे। फिर लेविमेर है वो भी 18 घंटे से लेकर 24 घंटे। व्हेन वंस यू टॉक अबाउट लेंटिस उसकी 24 घंटे प्रॉपर। लेकिन अगर आप बात करते हैं ग्लार्जिन, अब ये ग्लार्जिन 300 है 100 है एंड देन ग्लार्जिन 300, उसका फायदा ये कि ये जो टाइट कंट्रोल है उसमें आप थोड़ा सा टाइम, तो मैं इस पे टॉक नहीं करूंगा, ये फर्दर है, लेकिन मैंने जस्ट टच करने के लिए वी हैव इंसुलिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म जिसमें हमारे पास मेटफॉर्मिन है, सल्फोनाइलूरिया है, GLP-1 इंसुलिन रिलीजर है, DDP4 इनहिबिटर्स हैं, एंड देन इंसुलिन रिप्लेसमेंट इंसुलिन इटसेल्फ, एंड देन इंसुलिन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जिसमें हमारे पास SGL2 इनहिबिटर्स हैं। अब रोल ऑफ किडनी इन टाइप 2 डायबिटीज एंड SGL2, अब मोर देन up to 20% of gluconeogenesis जो more or less postprandially होती है, that is in kidney, and it account for about 10% of the total body glucose utilization. और जो सबसे important है, it filter and reabsorb up to 180 gram of glucose per day. So वो जो ग्लूकोज को absorb, और यहाँ पे ही हम जो हमारे को ये जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स हैं वो इसके ऊपर ही एक्ट करते हैं, तो ताकि वो जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसको रोके तो वो आगे बाय द किडनी इज रिक्लेम्ड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। सो वो हमारे पास SGL2 एंड SGLT1, सो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 जो है वो अराउंड 90% रीअब्जॉर्प्शन करता है, जो रिमेनिंग 10% है दैट इज SGLT1। तो दोनों SGLT1 एंड 2 मिलके वो जो टोटल प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन का कंप्लीट करते हैं बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर। Increase the amount of glucose that get excreted in the urine is approximately 60 to 80 gram per day। अब याद रहे कि हमारा बॉडी का एक थ्रेशोल्ड है, वो नॉर्मली कितना है, अराउंड 180 मिलीग्राम पर डे। अगर इससे ऊपर जैसे ही ब्लड शुगर जाती है तो
वो जो इनका ये दोनों जो SGLT1 एंड 2 जो है इनके ऊपर तो वो बॉडी एक्सक्रीट कर देती है और वो यूरिन में आ जाएगी शुगर। सो ये जो ग्लूकोज फिल्टर्ड हुआ वो सारे का सारा यहाँ पे SGL2 90% रीअब्जॉर्प्शन हो गई, रिमेनिंग 10%, लेकिन जैसे ही वो थ्रेशोल्ड बढ़ता है तो वो किधर चली जाएगी, अल्टीमेटली इन दी यूरिन। लेकिन जब हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है हमने SGL2 इनहिबिटर्स पे ब्लॉक किया तो वो 90% जो रीअब्जॉर्प्शन होनी है वो नहीं होती, लिहाजा यूरिन के अंदर glucose excretion increased immediately following the first dose of SGL2 inhibitors and was maintained at the end of a 4-week treatment period. Average normally 64 gram per day with 10 milligram of empagliflozin. और जब हम उसकी मैक्सिमम डोज देते हैं जो कि 25 है तो ये कितनी चली जाती है, अप टू 78 ग्राम पर डे वंस डेली एम्पा। सो ये वही प्रोसेस जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज। एक यहाँ पे है कि एम्पा को जब हम कंपेयर करते हैं विद डेपा एंड अदर ड्रग्स, सो एम्पा का जो है थेरेपेटिक रेंज तो नॉर्मली आप 10 to 25 मिलीग्राम पर डे दे रहे हैं। सिंपल की बात करते हैं, जब आप इसको कंबाइन करते हैं विद मेटफॉर्मिन तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शन 5, 10, 12.5। सो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट रेजिमेंट हैं। विद और विदाउट फूड कैन बी गिवन और पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है इन 1.5 आवर्स में आ जाती है और एलिमिनेशन हेपेटिक as well as renal. So 43% hepatic है and 57% is renal. So अगर एक तरफ ब्लॉकेट है तो दूसरी तरफ से एक्सक्रीशन हो जाती है। So लिहाजा this can be a good option for a patient even grade 3 CKD. There are different trials जिसमें एक superior reduction of A1C, especially one trial that shows EMPA in comparison with DAPA in similar dosage. Hemoglobin A1C reduction with EMPA was 1.6% while it was 1.2% with DAPA. When you compare with glimepiride, so you can again see empagliflozin जो है hemoglobin A1C reduction is superior at all level of A1C, whether it is on higher side around 10 or even on at hemoglobin 1 A1C 8. अब एडिशनल बेनिफिट जो एम्पा के साथ हमें मिलते हैं इन कंपैरिजन विद सल्फेनोलूरिया या इंसुलिन, तो वो क्या है? गुड ऑप्शन फॉर पेशेंट who are failing with metformin monotherapy, especially if weight is part of underlying treatment. जैसे अभी हमने शुरू में बात की obesity की. So Minzy et al. In 2018 reported reduction in body weight of 2.9 kg with monotherapy of SGL2 inhibitors. Or when given with metformin, so more or less double हो गया 4.7 kg weight reduction. जब हम बात कर रहे हैं यूज इन रमजान, दो मैंने ये स्लाइड ऐड की कि इसमें अक्सर पेशेंट को प्रॉब्लम ये आता है कि जी हमने रमजान में, क्योंकि इनके साथ जब यूरिनरी एक्सक्रीशन है उसके साथ वॉल्यूम डिप्लीशन होती है, तो बेस्ट है दोनों तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि 10% लोगों का ख्याल है कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 90% इन्वेस्टिगेटर्स इस बात पे मुत्फिक हैं, दे शुड बी गिवन एट द टाइम ऑफ अफ्तार. They also help in the reduction of triglyceride level. So to monitor these benefits of body weight, blood pressure को भी ये reduce करती है 2 to 3 millimeter of mercury and lipid profile,
at regular interval of 2 weeks. आपने initially monitoring करनी है at 2 week interval. Then there are side effects. तो हर चीज की अच्छाई के साथ बुराई भी है. तो इधर बुराई क्या है कि you can't give in advanced kidney failure. They may lead to hyperkalemia, hypotension and urinary tract infection. So ये बड़ा important है कि जिसको भी आपने SGLT2 inhibitor स्टार्ट करने आई पर्सनली कि जब भी मैं शुरू करता हूँ स्पेशली फीमेल पॉपुलेशन तो मैं उनका यूरिन कंप्लीट पहले कराता हूँ सो दैट क्योंकि कई दफा अननोइंगली उनको ऑलरेडी यूटीआई चल रहा होता है एंड दैट इज मोर वर्सन विद दीज ड्रग्स. सो ये अभी हमने बात की. देन दे शुड नॉट बी given in poorly controlled diabetic patient having hemoglobin A1C more than 9%. स्पेशली ये बात मैं कर रहा हूँ टाइप 1 डायबिटिक की. जो टाइप 1 डायबिटिक है अगर उनकी हीमोग्लोबिन A1C मोर देन 9% से ऊपर है these drugs should not be. पहले तो ये था कि these drugs should not be given. अब now there are trials के जी दे सकते हैं but with caution. So कंसिडर इंक्रीज डीके रिस्क. दे क्यों नहीं सकते थे? डीके रिस्क बढ़ जाता है इन पेशेंट. सो उनको आपने क्या फिर देना है? इंसुलिन, पंप थेरेपी स्पेशली जिनमें अगर पंप तो उनके साथ साथ आप इनको दे सकते हैं. यूज लोएस्ट अवेलेबल डोज ऑफ SGLT2 इनहिबिटर्स टू अचीव बेनिफिट एंड दे रिड्यूस पेरेंडियल इंसुलिन बाय 10 to 20% initially and adjust dose of prandial and basal insulin based on pre and post prandial glucose monitoring. So ये याद रखना कि वो जो basal bolus थेरेपी है कि जिसमें 50% आपने basal इंसुलिन देनी है और 50% आपने बोलस जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. तो एंड उसमें मॉनिटरिंग किसकी है? कीटोन टेस्ट. इफ पेशेंट इज फीलिंग सिक and blood glucose is especially more than 162 milligram. Stop SGLT2 inhibitors during intercurrent illness or condition where there is fluid loss or reduced fluid intake. और again जैसे मैंने पहले बात की कि advice about increased risk of genital and mycotic infections and diarrhea. So वहां पे आपने जी अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो टाइम बीइंग कई दफा यू हैव टू स्टॉप दीज ड्रग्स. सो इन समरी जैसे मैंने पहले कहा कि SGLT2 जो है वो 2 रिसेप्टर पे काम मोर देन 90% जो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन उससे हो जाती है एंड दे इंप्रूव हीमोग्लोबिन A1C, रिड्यूस फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और हाइपोग्लाइसीमिक एविडेंस जो है वो बहुत मिनिमम है. रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर एज वेल एज दे हेल्प इन वेट रिडक्शन एंड रिडक्शन इन कार्डियोवैस्कुलर एंड ऑल काज मॉर्टेलिटी एंड इंप्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी. जो एम्पारेट ट्रायल है जिसमें हम ये देखते हैं कि एट द एज ऑफ 45 4.5 ईयर सर्वाइवल बेनिफिट है. एट द एज ऑफ 50 आपके पास 4 ईयर सर्वाइवल है. सो जैसे जैसे एज बढ़ती है सो सर्वाइवल बेनिफिट थोड़ा सा कम होता जाता है. इवन दे आर बेनिफिशियल एट द एज ऑफ 70 to 80 years. So with that, thank you very much for patient listening. Thank you, sir, for starting the presentation on such a high note. Similarly, empagliflozin is identical to a knight in chess, the one and only piece that can jump over its adversaries and change the nature of the game. What benefits does the formidable ally empagliflozin has for us? For that, I would like to invite our next speaker, Dr. Sadia Salman. Dr. Sadia Salman is an FCPS in medicine as well as in endocrinology. So please welcome her on the stage.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो भूख का टाइम भी हो रहा है और मेरे ख्याल में नींद का टाइम भी हो रहा है. थोड़ा थोड़ा सा जाग जाए. वैसे हम लोग किस ड्रग के बारे में बात कर रहे थे अभी? एम्पाग्लाइफ्लोज़िन. सो कुछ ना कुछ लोग जाग भी रहे हैं. जो टॉपिक मुझे इन्होंने डिस्कस करने के लिए दिया था दैट वाज अ ट्रायल, एम्परर रिड्यूस ट्रायल, जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के ऊपर की गई थी, जिसमें डायबिटिक और नॉन डायबिटिक थे. थोड़ा सा भी इतनी अच्छी एक वंडरफुल टॉक हमने सुनी है, तो अभी फिर हमने क्या सोचा, वैसे तो हम सबको पता है, कोई प्रैक्टिकली भी करता है वेट रिडक्शन के लिए, कोई प्लानिंग शानिंग, कोई वर्कशॉप कर रहे हैं आप लोग? अभी डॉक्टर खालिद ने इतना अच्छा सा डिस्कशन किया. किस किस ने अब जाके पेट रखना है? नो वन इज इंटरेस्टेड इन पेट. सो जब भी हम डायबिटीज की बात करते हैं, ड्रग जो हमने सेलेक्ट करना होता है उसमें कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं. इतने सारे मार्केट में ड्रग अवेलेबल हैं. कौन कौन से ड्रग अवेलेबल है मार्केट में? सल्फोनाइल यूरिया अवेलेबल है, ओल्ड, मेटफॉर्मिन, और कौन सा अवेलेबल है? DPP-4 इनहिबिटर, और कौन सा अवेलेबल है? GLP-1 और ग्लाइफ्लोजिन. तो और कौन सा अवेलेबल है? PCDs. तो इतने सारे मार्केट में ड्रग अवेलेबल हैं. हम लोग ने सिलेक्ट कैसे करना होता है ड्रग? So drug should be efficacious, drug should be safe, and there should be ease of use, and there should be evidence-based research जो कि उसकी सेफ्टी प्रूफ कर रही हो. और सारे ड्रग्स को कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी ट्रायल से गुजरना पड़ता है, बिकॉज इन डायबिटिक पेशेंट कार्डियोवास्कुलर रिस्क डबल हो जाता है. इसलिए सारे जो ड्रग हम एंटी डायबिटिक यूज करते हैं, दे नीड टू पास अ कार्डियोवास्कुलर ट्रायल एज वेल. These are the name of drugs जो कि अभी हमने बात की: बाइगोनाइड, सल्फोनाइल यूरियाज, SGLT2 inhibitors, and the other groups. So this is a scenario: a 55-year-old male non-diabetic presented with complaints of uncontrolled sugars, different readings, different time पे raised आ रही है, and hemoglobin A1C is 7.8, and he's using metformin 1 gram twice a day. क्या करना है? टारगेट क्या है? कितनी लेकर आनी है hemoglobin A1C? हाँ, लेस देन 7. एंड करना क्या है इस पेशेंट को? इतने लॉन्ग लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं, आप कोई भी दवाई ऐड कर सकते हैं. क्या ऐड करना चाहेंगे? सीटाग्लिप्टिन, अ गुड ऑप्शन. और सॉरी, बिल्कुल. Because the longer the history will be, it will be much better that we do not go for the tighter control. ठीक है, ठीक है. बट फॉर इट डिपेंड्स. इन्होंने कहा कि जितनी शुगर की उम्र लंबी होती जाती है उतने हमने टारगेट्स रिलैक्स करने होते हैं. अगेन देयर आर कोमोर्बिडिटीज एज वेल एज देयर आर कोमोर्बिडिटीज के अलावा एज ऑफ द पेशेंट मैटर्स. तो उसमें हम लोग टारगेट्स रिलैक्स कर सकते हैं. फॉर दिस पेशेंट 55 year, maybe less than 7% is okay with this only metformin 1 gram twice a day. So one person said DPP-4 good option, fair enough. Sulfonylurea may be okay. And कोई मरीज से सवाल भी करने चाहिए दवाई शुरू कराने से पहले? 2-4 सवाल कि हम मरीज से क्या क्या बातें करें. कोमोर्बिडिटीज वेरी गुड. और मरीज का वेट भी देखना चाहिए. मरीज मोटा है तो हमने उसको पतला करना है, तो हम कोशिश करेंगे वो ड्रग दें जो वेट न्यूट्रल हो या वेट रिड्यूस कर रहे हो. और हाँ, बाकी अदर कंप्लेंट्स क्या हैं? ठीक है, न्यूरोपैथी पूछ ली. हार्ट पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज है कि नहीं है, या फिर उसका RFT जैसे आपने चेक किया है, उसकी GFR कितनी है, उसकी किडनी खराब है, उसको प्रोटीन यूरिया हो रहा है, या पेशेंट नॉन पेशेंट है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का. तो हमारी ड्रग की चॉइस थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी, रादर बदल जाएगी. अगर पेशेंट अफोर्ड करता है तो हम अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे. सो इसी पेशेंट के अंदर चलना बंद हो गया. नेक्स्ट स्लाइड नहीं मूव कर रहा ये. अगर इसी पेशेंट को वो आके कह देता है कि आई एम ए नॉन पेशेंट ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज,
then हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. We will prefer an SGLT2 inhibitor or GLP-1. सेल खराब हो गया, इसको भी एम्पाग्लाइफ्लोजन देनी पड़नी है. एनीवे, अगर इस पेशेंट को मुझे आके कहता है कि मेरा इससे नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. ओके, पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज और एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और पेशेंट हैज अ प्रोटीन यूरिया और उसकी जीएफआर हमारी ज्यादा है, और patient has heart failure with reduced ejection fraction, then our choice will be either an SGLT2 inhibitor or GLP-1 analog receptor. उसमें हमारे पास ये कि वो इंजेक्टेबल फॉर्म में अभी ओरल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट उसकी इससे भी ज़्यादा महंगी है. तो अगर पेशेंट में ये इंडिकेशंस आ रही हैं तो our choice will be a different one. तो वो सारी चॉइस आप यूज कर सकते हैं, but if patient is affording and there is no contraindication, then we have to add with an SGLT2 inhibitor as well. Next slide. हाँ, वो मतलब you have to ask this question to the patient ना, कि जब आप पेशेंट को दवाई दे रहे हैं तो आपने उसको देखना है. इसमें मैंने अगर इस पेशेंट का मे बी इट इज लेस देन 30, मतलब मैंने इसमें ऐड नहीं किया, ओपन क्वेश्चन है, लेकिन आपने पेशेंट से पूछना है ताकि पेशेंट को उसका नीडेड बेनिफिट दिया जा सके. So management plan, इस पे तो हमने बात कर ली. So what are the compelling indication to start SGLT2 inhibitors? अभी हमने बात की क्या है compelling indications कि जिसमें देना ही देना है. Ischemic heart disease, yes. Okay, obesity compelling indication नहीं है, but it is a good option in obesity. But in urea और kidney के हिसाब से अगर contraindication नहीं है तो अगर उसकी kidney खराब है, must give a trial. और अब जैसे मैं एम्परर रिड्यूस ट्रायल प्रेजेंट करना है तो उसमें हमारे पास इसके अंदर हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में इसके बड़े बेनिफिशियल रिजल्ट्स आए हैं. हो गया. सो जीएफआर कट ऑफ क्या है? हर मरीज को एम्पा डाल देना या हमने जीएफआर देखी किससे नीचे नहीं देना. For empagliflozin we say below 45 don't start, लेकिन अगर already ले रहा you can even wait with 30, but GFR cutoff right now it is 45. When to avoid use of SGLT2 inhibitors, डॉक्टर खालिद ने भी अच्छे से बताए सारे साइड इफेक्ट्स. हाँ, अच्छा, यूटीआईज जो है ना 1 to 2% में भी बढ़ता है. जेनिटल माइकोटिक इन्फेक्शंस फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा, तो सो रिकरेंट यूटीआई, जेनिटल माइकोटिक इन्फेक्शन, और पेशेंट्स कैना के साथ एम्पुटेशंस रिपोर्ट हुई, एम्पुटेशन रिस्क बढ़ा था. तो वो पेशेंट्स जिनके अंदर ऑलरेडी कोई एम्पुटेशन हुई है और जिसका कोई ऑलरेडी अल्सर्स वगैरह का इशू है और मे बी ऑस्टियोप्रोटिक फ्रैक्चर्स भी कैना के साथ आए थे, तो वो चीजें आपने पेशेंट से पूछनी और उसको बताना भी है. यूग्लाइसेमिक डीके इज अनदर साइड इफेक्ट इसका. तो इसमें ये कि अगर पेशेंट को शुरू करवाते हैं टाइप 2 डायबिटिक्स में भी इवन अगर कभी उस तरह का कोई पेशेंट, वेरी वेरी रेयर थिंग, बट पेशेंट अगर एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग के साथ आ जाए, यू ऑलवेज चेक, बिकॉज यू ग्लाइसीमिया तो उसमें शुगर तो कंट्रोल ही होगी, तो उसमें आपने कीटोन जरूर चेक कर लेने हैं. So now coming to the trials, this is about the EMPA-REG trial. एक बड़ा लैंडमार्क ट्रायल है इसमें. हमारे पास EMPA-REG ट्रायल के अंदर एम्पाग्लाइफ्लोजन इन एडिशन टू स्टैंडर्ड केयर रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर रिस्क एंड इम्प्रूव्ड ओवरऑल सर्वाइवल इन एडल्ट्स विद टाइप 2 डायबिटीज एट हाई रिस्क. सो हमारे पास 14% मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स रिड्यूस हुए थे, 38% कार्डियोवास्कुलर डेथ रिड्यूस हुई थी, 32% ऑल कॉज मोर्टेलिटी, 35% हार्ट फेलियर एंड हॉस्पिटलाइजेशन, एंड 39% इंसिडेंट ऑफ वर्सिंग नेफ्रोपैथी. सो पेशेंट में अगर ये चीजें हैं तो उसको इस ड्रग का एडवांटेज देना चाहिए. नाउ कमिंग टू द टॉपिक जो मुझे आज उन्होंने प्रेजेंट करने के लिए दिया था, दिस इज अ ट्रायल, एम्परर रिड्यूस ट्रायल. So this is effect of empagliflozin on cardiovascular and renal events in heart failure with a reduced ejection fraction. तो इनमें ये वाले पेशेंट्स ऐड किए गए थे और ejection fraction कितनी reduce थी वो अभी इसमें आ जाएगा. In this trial, the effect of EMPA was evaluated in a broad population with patients with chronic heart failure and a reduced ejection fraction.
Now, with and without diabetes, that was enriched for the patient with more severe left ventricular systolic dysfunction and marked increase in natriuretic peptide. So जो patients उन्होंने add किए थे उनमें या तो ejection fraction was less than 30% और अगर ये more than 30% थी तो उनमें उन्होंने BNP level check किया था जो कि high होना चाहिए और साथ में और a hospitalization for a heart failure within 12 months. So eligible patients को उन्होंने randomize किया 10 milligram AMPA और placebo के साथ. These were the endpoints जो हमने देखने थे patients ने achieve किए हैं कि नहीं. Primary endpoint was the composite of cardiovascular deaths or heart failure hospitalization, and these were the two secondary endpoints. One was total heart failure hospitalization, and secondary related to kidney, the slope of decline of GFR over time. So what happened? This was the initial patients, then randomization done, and half patients को उन्होंने एम्पा 10 और बाकियों को प्लेसिबो दे दिया. These are the baseline characteristics कि patients की ejection fraction कितनी चल रही है, comparable था दोनों groups में और BNP level भी comparable थे, GFR भी comparable था, and patients जो कि RAS या SCOBY-TIL पे थे वो भी comparable थे. So this is a slide. प्लेसिबो के साथ हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है. इट इज अबाउट द प्राइमरी एंड पॉइंट कार्डियोवास्कुलर डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन फॉर हार्ट फेलियर. प्लेसिबो के साथ हमारे पेशेंट्स इतने आ रहे हैं 462 पेशेंट्स विद इवेंट रेट ऑफ 21 per 100 पेशेंट्स, बट विद एम्पा 361 पेशेंट्स विद इवेंट रेट ऑफ 15.8. सो इट वाज अ 25% risk reduction in these patients. That is a good number. And अगर हम लोग इफेक्ट देखें on the individual component of primary endpoint in the AMPA group and in the placebo group, primary composite outcome इसमें 361 और इसमें 462 है. First hospitalization for heart failure इसमें number of patient इसके निस्बत काफी कम है, and cardiovascular deaths again they are less than this number with a significant p value. और अगर हम उन patients के primary endpoint के सब groups और सब analysis करें तो सारी चीजें, it responded well in diabetics and non-diabetics, in age less than 65, more than 65, in all weights, and in the GFR it responded well, and this graph was well on the empagliflozin side. So empagliflozin worked well in all these subgroups. Now coming to the secondary endpoints, first was total hospitalization for heart failure, first and recurrent. Again, with the placebo, it was 553 events, and with AMPA, it was 388 events. So again, it was reduction of 30%. Heart failure का patient की recurrent hospitalization बहुत ज़्यादा हो रही होती है, but it reduces well. And if we talk about the kidney decline in GFR, the patients who were started with the placebo and with the AMPA, the decline of the empagliflozin, it was more slow, and then it towards after 16 weeks, 16 months, it come over here, but over the placebo, it goes down, down, and down. So the reduction over 16 months, 4.2 was with the placebo, and with the EMPA, it was 0.9. So a good stop, GFR का decline काफी अच्छा slow हो गया था इसके साथ. Or this was about the composite renal endpoint. With the placebo, the renal events, they were on the higher side. With the EMPA, it was on the lower side. So 50% reduction in the renal endpoints. So all these primary endpoint, secondary endpoint, they all achieved with a significant p-value. And beyond these, जो भी हमने markers भी सारे check किए, they were quite good. जैसे डॉक्टर खालिद ने बताया, weight reduction placebo की निस्बत इसमें अच्छी weight reduction रही, BNP level कम रहा इन patients का, hemoglobin A1C was quite good, and blood pressure was quite well controlled in the EMPA group, and the cardiac events, they were lower in the EMPA group, and worsening renal function were low in the EMPA group. So this is a comparison. इससे पहले एक बड़ा ट्रायल डेपा हार्ट फेलियर ट्रायल आया था विद एम्परर रिड्यूस ट्रायल. डेपा हार्ट फेलियर ट्रायल भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में था, एंड दिस एम्परर रिड्यूस ट्रायल, द इवेंट्स वर ऑलमोस्ट कंपेरेबल इन बोथ. सो वी कैन कंपेयर दिस बोथ ट्रायल. एम्पा इज इक्वली एफिकेशियस इन द हार्ट फेलियर पेशेंट एज डेपा. In patients with chronic heart failure and reduced ejection fraction, EMPA reduced achieved all three endpoints,
and the 25% decrease in the risk of composite cardiovascular deaths and heart failure hospitalization observed in the EMPEROR-Reduce trial that was identical to the DAPA-HF. So we can use this drug in the heart failure patients with reduced ejection fraction. मेरी practice में तो basically अभी तक diabetic patients मेरे पास होते हैं. नॉन डायबिटिक्स के अंदर इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, बट पर्सनली आई हैव नॉट यूज्ड इट इन. कार्डियोलॉजिस्ट कैन बेटर टेल बिकॉज प्रॉब्ली उनके पास नॉन डायबिटिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स भी होते हैं कि उनका यूज इसके अंदर कैसा है, लेकिन स्टडी डॉक्यूमेंट कर रही है, द रिजल्ट्स आर वेरी गुड. किस नंबर पे यूज करना है, और हार्ट फेलियर की और बहुत सारे ड्रग्स हैं, एस इनहिबिटर्स चल रहे होते हैं, स्किबिट्रल दे रहे हैं, और काफी सारे ड्रग्स हैं, तो वो इसको किस स्टेज पे यूज करते हैं, किस लाइन पे, इस पे हमें बैटर जो है ना फर्दर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन हेल्प करेगी. सो कमिंग बैक, ट्रायल तो मैंने जल्दी जल्दी गुजारी है क्योंकि ट्रायल से अक्सर लोग बोर हो जाते हैं. जब भी आपने एम्पाग्लाइफ्लोजिन शुरू कराना है, कुछ चीज़ें देखनी है, गर्मी का मौसम है, पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस देख ले, ओल्ड एज पेशेंट है, डायरेटिक तो नहीं ले रहा, एनिसिड्स तो नहीं खा रहा, किडनी खराब है तो कितनी खराब है, फॉलो अप जरूर लेना इन पेशेंट्स का. तो वॉल्यूम स्टेटस, रीनल स्टेटस, LFT स्कैन और डापा के लिए चाहिए. ओल्ड पेशेंट है, मे बी बोन डेंसिटोमेट्री हम लोग कर सकते हैं. और अगर पेशेंट इंसुलिन पे, जैसे डॉक्टर खालिद ने बताया, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, तो उसमें आप लोगों को मे बी यू कैन रिड्यूस द डोज एंड नेवर स्टार्ट इन द पेशेंट विद लेस देन GFR ऑफ 45. मॉनिटरिंग में आपने पेशेंट से साइन एंड सिम्टम्स पूछने हैं, जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शंस के, और फुट अल्सरेशन, ग्लाइसेमिक इंडिसेस, RFTs, ये रूटीन में हम लोग सारे कर रहे होते हैं. एंड ऑलरेडी डिस्कस्ड साइड इफेक्ट्स ऑफ SGLT2 इनहिबिटर्स. नाउ टेक होम मैसेज वाली स्लाइड मैंने खाली छोड़ी हुई है. टेक होम मैसेज आप लोग बताएं कि क्या टेक होम मैसेज होगा इसका, इस स्लाइड का. SGLT2 inhibitors in the patients who have compelling indications or you have assessed those जो कि उसके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं और आप उनकी मॉनिटरिंग करने वाले हैं और वो उसको अफोर्ड कर रहे हैं और इसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, देन ऑब्वियसली SGLT2 inhibitor. थैंक यू. क्वेश्चन आंसर में कोई नहीं. जी आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे होगा. Thank you, ma'am, for enlightening us all with such knowledge. The knight not only jumps over its adversaries, but its moves are always 3 by 2. Empagliflozin not only prevents cardiovascular events, but also chronic kidney disease events. For that, I would like to invite our next speaker, Dr. Numan Tarif. Dr. Numan Tarif is an MBBS and DAB in internal medicine as well as nephrology. Please welcome him on the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Insulin is a medicine. I am not, very comfortable changing medication too much because it is a domain of the endocrinologists, general physicians. But SGLT2 inhibitors, if you have gone through it, the endocrinologists, the general physicians, they will say this is our drug. But when it came to the beneficial effects, the nephrologists, they claim that this is our drug because it can be used in diabetic and non-diabetic patients also to decrease the proteinuria, to decrease the slope of GFR. Similarly, in cardiac patients where they are diabetic or non-diabetic, in HFrEF and HFpREF, it has shown its beneficial effects. So no doubt this is a revolution in terms of treatment and management of diabetes and these comorbidities which are there. So this is, you have gone through many of these slides, there will be repetition. So I'm not going to just keep on repeating the things that have been told already. And the mechanism you already know about the SGLT2 inhibitors. As you can see in this slide, it says decrease in the intraglomerular pressure. If the pressure, in simple terms, if the pressure is increased within the glomerular capillaries, so they will be stretched
and damage to the capillaries. And what will happen is this is going to increase the pro-fibrotic and the cytokines and everything, and that is going to cause further decline in the GFR. So if you look at this slide, this is a beautiful slide here. You see this glomerulus, maybe you can't see some of you here, but within the glomerulus, there is an afferent arteriole and there's an efferent arteriole that takes the blood out. So the afferent arteriole and efferent arteriole, as you already know, are affected by the angiotensin II. The efferent arteriole, it constricts the efferent arteriole, but it does not constrict the afferent that much. So within the glomerulus, the pressure is going to go up. अगर पाइप पकड़ी हुई एक तरफ से आपने स्क्वीज कर दिया तो बीच में प्रेशर बढ़ जाएगा. अगर आप ACE इनहिबिटर या ARBs देंगे तो efferent arteriole या जो पाइप जो बाहर पानी जा रहा है उसको आप रिलीज करेंगे तो प्रेशर विद इन द ग्लोमेरुलस कम हो जाएगा. उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रोफाइब्रोटिक या डैमेजिंग इफेक्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे. तो साइटोकाइन प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, सो प्रोटीन यूरिया विल डिक्रीज and you will have an improvement in GFR, or the creatinine is also going to improve. So इसी तरह जो SGLT2 inhibitors, इनका effect efferent की बजाय afferent arterioles पे है. So अगर आपने इन जितने भी trials हैं, EMPA, DAPA वगैरह वगैरह, इन सब में baseline they are all using ACE inhibitors और ARBs. बल्कि एक दो studies ऐसी हैं जिनमें it was mandatory. और कुछ स्टडीज में कभी ठीक है यूज करे तो फिर ले लें, नहीं यूज करे कॉन्ट्राडिकेशन तो कोई बात नहीं, यू इंक्लूड देम इन द स्टडी. नाउ दिस इज द ओनली स्लाइड आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम, एंड दिस इज द स्लाइड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू in familiarize yourself with the beneficial effects of the empagliflozin or gliflozins. If you look at the same glomerulus, when there is an SGLT2 inhibitor, so there is going to be inhibition and increase in salt and glucose movement within the tubule. So जो आपके जो tubule है, proximal tubule से, क्योंकि सोडियम और ग्लूकोज दोनों इकट्ठे एब्जॉर्ब होते हैं, इट्स अ को ट्रांसपोर्टर. जब आप उसको बंद करेंगे तो सॉल्ट भी लूज होगा और ग्लूकोज भी लूज होगी. सो व्हेन द सॉल्ट एंड ग्लूकोज इज लॉस्ट, इट गोज फर्दर. जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा या जो FCPS की तैयारी कर रहे हैं या मोर इनटू फिजियोलॉजी, उनके बाद देयर इज अ ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक. जब आपके कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जब सोडियम ज्यादा आएगा तो देयर विल बी एन इमीडिएटली, जो कि उसके साथ ग्लोमेरुलस के साथ जुड़ा हुआ है, देयर विल बी एन इमीडिएटली सिग्नल दैट विल गोइंग टू बी सेंट टू द ग्लोमेरुलस थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड, either its inhibition or its production. As you know, the nitric oxide is a vasodilator. So जब सोडियम ज्यादा जाएगा, there will be an inhibition of nitric oxide and there will be a vasoconstriction. अब जो vasoconstriction है वो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आने वाले में है. तो जब ये vasoconstriction होगी तो ग्लोमेरुलर के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और ये वही इफेक्ट है जो आप ACE inhibitor या A2RB से ले रहे हैं. और ये जो इफेक्ट है ये A2RBs ASB inhibitors का efferent से आ रहा है. So now you have given the patient ACE inhibitors and A2RBs, and on top you are giving the SGLT2 inhibitors. So you are adding up the beneficial effects. So in the end, you will see, as was shown before, 50% reduction in the endpoints and renal endpoints there, composite renal endpoints. जिसमें doubling of the creatinine, या slope of the GFR or proteinuria. Everything improves from 30% to 50% in different trials. अब इसमें जो एक चीज देखने वाली है कि जब salt lose होगा तो साथ उसके water जाएगा, and there will be decrease in the weight. Almost like 2 to 3 kg of weight is reduced. And with this loss of weight and water and salt, there will be improvement in blood pressure of about 2 to 4 millimeters of mercury. And it's a huge effect. So you're getting an effect in terms of control of sugar. You are improving the salt and water reduction by reduction, and improving the overall volume status. So you get a beneficial effect in terms of cardiovascular effects. So heart failure improves. Many of these studies show कि आपके heart failure का incidence
कम हो जाता है, वो इस वजह से होता है। और ये आपको बेनिफिशियल इफेक्ट उनमें भी मिलता है जिन पेशेंट में पहले कार्डियक डिजीज नहीं थी और वो स्टडी में साथ साथ चल रहे थे। सो यू गेट अ बेनिफिशियल इफेक्ट देयर। और तीसरी चीज जो बताई गई थी कि शुगर इज लॉस्ट समवेयर अराउंड 70 ग्राम्स पर डे, सो ऑलमोस्ट 300 किलो कैलोरीज लॉस्ट पर डे। सो ये आपके एक वेट रिडक्शन में फर्दर हेल्प करती है। और इसी तरह एक इफेक्ट जो अभी पिछली स्लाइड में बताया गया था, दैट वाज ए हेमाटोक्रिट। एक्चुअली इन द रीसेंट स्टडीज व्हाट इज बीइंग शोन, जिन पेशेंट्स में हेमाटोक्रिट इंक्रीज हुआ है उन पेशेंट्स में देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द कार्डियोवास्कुलर एंड द रीनल इफेक्ट्स। और उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप SGLT2 इनहिबिटर से उसको इनहिबिट करते हैं, so there is a vasoconstriction in the afferent arterioles and there is a redistribution of blood। तो आपका एक कॉर्टेक्स जो किडनी का है जहां पे एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन होती है एंड दैट गेट्स इम्प्रूव्ड। और वहां पे चूंकि इम्प्रूवमेंट होती है तो वहां पे एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही हेमाटोक्रिट इंक्रीज होगा, दैट इज गोइंग टू फर्दर हेल्प इन टर्म्स ऑफ एंजाइना एंड अदर थिंग्स देयर। एंड इट आल्सो अ मार्कर कि भी आपका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है और आपका हेमाटोक्रिट बढ़ा है। So these are some of the beneficial effects of SGLT2 inhibitors in terms of the kidney function। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जो सबसे important है वो है hyperfiltration। You already know, I don't need to hammer this again, कि टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में इनिशियल जो प्रॉब्लम आती है वो हाइपरफिल्ट्रेशन है। बिकॉज जिस तरह बताया एंजियोटेंसिन 2 उसका इफेक्ट है, तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। You will see a 6-foot person with a weight of maybe 90 kg with a creatinine only 0.4, तो उसका GFR कितना होगा 180 ml per minute और 200 ml per minute। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि भाई आपके गुर्दे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता ये थक जाएंगे। तो आपके लिए क्या करना है? आप इसको शुगर कंट्रोल करो, आपको दवाइयां देते हैं वगैरह वगैरह। द पेशेंट विल देन अंडरस्टैंड, विल गेट वरिड। So our main concern is that the patient तक ये पैगाम पहुंचे कि भी ये मामला गड़बड़ है और let's help you out। अच्छा जी, renal outcomes, Empereg already been mentioned by the speaker before me, so I don't need to go through this कि proteinuria कम हो गया और GFR decline वगैरह सारा improve कर गया। ठीक है, ये वही slides हैं post hoc renal, because this is such an important medicine that every department of medicine now is claiming। एक जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो मजीद आ रही है वो ये है कि एनिमल स्टडीज हैव शोन दैट दीज मेडिसिन कैन डिक्रीज द साइटोकाइन प्रोडक्शन। और बाकी जो सारे सिलसिले हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अभी तक स्टडी नहीं हुई लेकिन सिर्फ ह्यूमंस में, लेकिन इट इज शोइंग दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द इन्फ्लेमेशन। जब आप इन्फ्लेमेशन डिक्रीज करेंगे तो आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस और बाकी सारी चीजें और फाइब्रोसिस कम होती जाएगी। सो देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स और द बेनिफिशियल इफेक्ट्स दैट वी स्टिल डोंट नो and there is still work going on। So you have already seen 44%, 39% and 38% reduction। ये सारे mechanism भी आपको सारे इसके beneficial effects भी बता दिए गए हैं। blood pressure reduction, body weight, arterial stiffness। जब आप improve करते हैं volume status, if you decrease the preload, और उससे क्या होगा? उससे आपके cardiac कंट्रैक्टिलिटी बेहतर हो जाएगी, उससे आपका आर्टीरियल स्टिफनेस सारा भी बेहतर हो जाती है। अच्छा जी, ये भी सारा डिस्कस हो गया, आई डोंट नीड टू गो थ्रू दिस। और ये भी बेनिफिशियल, और देयर आर सर्टेन पेशेंट्स हु मे गेट 4 years गैंग्रीन, बट इट्स अ स्मॉल डेंजर और साइड इफेक्ट दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। सो जब भी आप देखें किसी पेशेंट को, जिस डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई जब आप शुरू करते हैं तो पहले यू फर्स्ट गेट अ यूरिनालिसिस बिफोर स्टार्टिंग in patients who have a history of urinary tract infection, ताकि infection हो तो उसमें, क्योंकि there will be a lot of sugar in the urine and there is going to be a sitting duct for growth of bacteria। और दूसरा आपने important ये देखनी है कि भी उनमें वॉल्यूम डिप्लीशन बना कर देखना, ये ना हो कि पेशेंट को आप सारा कुछ दे रहे हैं, आपने SGLT2 स्टार्ट कर दी, वॉल्यूम कम हुआ, पेशेंट चक्कर खा रहा है, गिर रहा है, फ्रैक्चर कर रहा है बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस, एल्डरली पेशेंट। सो एज ए फिजिशियन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस पहले भी स्पीकर्स ने कहा कि व्हेन टू स्टार्ट दिस मेडिसिन, कौन सा पेशेंट है जिसको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे डॉक्टर साहब ने कहा कि भी 2 weeks में मैं सब कुछ देखूंगा। क्यों? यू वांट टू बी एब्सोल्युटली श्योर
कि जो आप मेडिसिन दे रहे हैं, the medicine is going to be beneficial or it's going to cause some harm. If there is an increase in the creatinine or decrease in the GFR about 30%, don't worry. This is going to happen. क्योंकि जब आप SGLT2 inhibitor start करेंगे, प्रेशर कम होगा, क्रेटिनिन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, और so much so कि starting point of these SGLT2 inhibitors is somewhere around 40 to 30%. तो उस पर आप ये start कर सकते हैं. तो इन पेशेंट्स में अगर आपने ये स्टार्ट की है और उसके बाद GFR कम हो गया 30% से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बंद कर दें. इसका मतलब है ये तो बेनिफिशियल इफेक्ट आना शुरू हुआ है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी दैट यू विल अगेन फॉलो दिस पेशेंट आफ्टर 2 to 3 weeks एंड सी कभी और ज्यादा तेजी से तो नहीं कम हो रहा. और उसका ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, दे डिक्लाइन देयर GFR अबाउट 1 ml per minute per month. अगर उससे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, आपने देखा भी GFR 2 महीने के बाद 2 की बजाय 6 ml पे ड्रॉप कर गया, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग, द पेशेंट इज नॉट टॉलरेटिंग, ये जरूरत से ज्यादा GFR ड्रॉप हो रहा है, तो उसमें देन यू कैन स्टॉप द मेडिकेशन एंड गो फॉर अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस. ठीक है जी. So I think I'll just end here. I hope you know the message is clear that these are the beneficial medications. These are very useful medications. We are seeing a lot of diabetic patients, lot of complications. Our healthcare whole system is overburdened by these medications, with these disease and the complications. आप dialysis units में देखें, they are भरे पड़े हैं, लाइनें लगी हुई हैं, वेटिंग लिस्ट, साल साल की वेटिंग लिस्ट है जिना हॉस्पिटल में, इधर क्या इसका नाम है, शेख जायद में, बाकी भी हॉस्पिटल में 6-6 महीने की लिस्ट. आज आप एक डायलिसिस यूनिट खोलें, इट विल बी ऑल फुल विद इन मंथ और सो, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट आफ्टर 1 month विल बी फॉर 6 months और सो. तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन मेडिकेशंस को यूज करें अपने पेशेंट्स की बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए, so that we can improve their health and so that we can decrease the complications. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab, for your coverage on the subject. But what is a knight that cannot end the game with a checkmate? Similarly, empagliflozin prevents end organ safety in cardiovascular events. For a game of chess to end, the knight must lead to check that which has opponent think carefully of its next moves. For that, I would like to invite our last speaker, Dr. Tayyib Mahiuddin, consultant cardiologist. Dr. Tayyib Mahiuddin is a doctor of medicine, fellow of American College of Cardiology, and fellow of Society for the Cardiovascular Angiography Interventions. Please welcome him. Thank you very much. Hopefully we'll finish the chess game in next 5 minutes. So all of the worthy speakers before me has kind of highlighted everything. There's not a whole lot that's left for me to add. I think they have talked about Emperor, DAPA, heart failure, and Empareg. That I think I have the slides that I'll show up. While they pull up the slides, I'll just say I think from my standpoint, from cardiology standpoint, it's the jury's out at this point in time. This is class 1 indication for HFrEF at this point. So whether patient has diabetes or not, as long as they are symptomatic on guideline based medical management, these are the new agents that needs to be added. It's a very exciting time for cardiology or for heart failure that within past 24 months, we have 2 agents which made it to class 1. For Pakistan, we have the ARNI that came in, although the ARNI has been here for 6 years. Entresto के नाम से बाहर के मुल्कों में, और हमारे यहाँ पे Uperio और इनका Satuan, and the second compound is this SGLT2 inhibitors. Both of them have class 1 indication for HFrEF patients with heart failure with ejection fraction less than 40%. So without further delay, we'll quickly run through these slides. So I'll be talking about this Empareg trial. I think our other colleague talked about Emperor and DAPA, and Dr. Tarif talked about the renal functions of it. So again, these are they have again and again described this mechanism that they stop the SGLT2 inhibition and the glucose in the sodium goes out of the body, results in reduction in HbA1c, weight loss, reduction in BP without increase in heart rate. So Empareg is a randomized double-blinded trial. They had 7,000 patients. They have 3 arms, 1 placebo, 1 10 milligram dose, and 1
25 milligram dose. And the primary outcome was they required 691 patients to experience the primary outcome, which was a MACE. And MACE was a 3-point MACE, which they'll come to CV death, hospitalization, or heart failure. So, and then they had individual analysis of these also. So the beauty of randomization that, you see all three groups are very comparable in their demographics. So this was the 3-point MACE that shows that this favors empagliflozin with a p-value of 0.038, and then individual MACE component, CV death, non-fatal, MI, non-fatal, stroke. So these two are also favoring the empagliflozin for this EMPA-REG trial. Again, with Kaplan-Meier curve, we are looking at placebo versus EMPA-10 and EMPA-25. And I think Dr. Sadia showed these slides already. So you could see that she showed the relative risk reduction, and I'm just showing the other ones, that the hazards ratio 0.65, 0.66, and there's a very significant p-value in these patients, that you could see that the heart failure hospitalization for these patients are very. So most of these hospitalization for or death from heart failure also. So very significant p-value when you follow these patients for 46 months. So most of these outcomes that we are looking at are for the heart failure patients. And these are HFrEF patients with ejection fraction of less than 40%. All-cause hospitalization. This is a huge burden on healthcare, as Dr. Tarif just pointed out, that, we have so many patients who have these chronic disease conditions, which is chronic kidney disease and heart failure, and they're coming in with fluid overload. So government hospitals, private hospitals, we usually are swamped with these patients coming in again and again. It's difficult in not alone here, but even in the Western Hemisphere, in America and other places where the healthcare is of different scale. Still, this is the most commonly billed Medicare DRG group that Medicare has to spend money on heart failure hospitalization. So again, this shows without patients with heart failure or patients with heart failure. So you could see how much is the difference between placebo and if they give EMPA, how much difference does that make? So, and again, same thing with heart failure or cardiovascular death. Again, it's a big difference. So the patients who have heart failure are the ones who benefit the most from these medications. So just to summarize that, they have put all the relative risk reductions here. So from my standpoint, the relative risk reduction for cardiovascular death, 35%. They mentioned about body weight also. And again, hospitalization for heart failure or all-cause mortality was 30% or less. HbA1c, again, I would leave it up to my endocrinology colleagues, but definitely it made a big difference for patients as compared to placebo. Weight, again, as I showed, was decreased with these medication, and mostly because of possibly with natriuresis that it causes. Again, helps with the blood pressure also. So all the outcomes that are improved. So if the slide says 2 different diuretics, I don't want anybody to take home the message that this is a diuretic, not at all. But yes, the mechanism of action does increase. They said the tubular sodium goes up. So that may result in decreased plasma volume. But essentially, this is not a diuretic, but it does have some effect. It's the same thing. The ARNI is not a diuretic, but it does have natriuretic effect in it. You cannot use these drugs for diuresis. So ultimately, the way these things work, they ultimately ended up decreasing the left ventricular hyper. So the way it happens is when a patient has a heart failure, what happens is left ventricular hypertrophy happens, increased cytokine and inflammation goes up. That's why you want to inhibit all these receptors. I don't know, Dr. Chima would remember that back in the 70s, the beta blocker used to be the contraindication for heart failure patients. And most of the pharmacology books would say you don't give beta blockers. Now it's a class 1 indication. If you don't give beta blocker, you're doing a disservice to your patient. So definitely so what I mean wanted to come to allude to is that you need to inhibit certain receptors for the heart for not to remodel, and that's what it involves, these ACE receptors, ARBs. Now the sacubitril part came in, and same thing now with SGLT2 also. The way it helps with the heart failure is that it results in decreased interstitial edema, decreased remodeling, and all these good things happen when you inhibit these receptors for the heart. So again, that it says these positive mechanisms underlying SGLT2 inhibitors that results in cardiovascular benefits are improvement in ventricular loading condition through a reduction in preload that is secondary to natriuresis, osmotic diuresis, and afterload reduction, which is mostly through blood pressure improvement and improvement in vascular function.
Also, it improves cardiac metabolism and bioenergetics, and myocardial sodium hydroexchange inhibition also. This results in necrosis and reduction of cardiac necrosis and cardiac fibrosis. So SGLT2 inhibition results in decreased inflammation, and all of these things results in decreased LV remodeling and more efficient cardiac contractility, results in improved cardiovascular outcomes. So essentially it's working on the kidneys, but all the neuromodulation that it's causing towards that side will result in decreased remodeling of the heart that would improve the cardiac outcomes. So again, they have put in major risk versus benefits. So there is some risk factors that they have explained, the endocrinologist, and they would be well versed in them as compared to me. For us, as long as there is no obvious contraindication, which is basically no side effect, no major allergic side effect, or your creatinine clearance or GFR is not less than 45, or unless and until you have a big history of this genitourinary infections, I think with heart failure, the data is very much convincingly there. If the patients have HFrEF, EF less than 40-45%, and they're still symptomatic, we need to add these medication to their routine drugs. Doesn't matter if they are diabetic or not. If they have episodes of hypoglycemia, at that point, you can consider withdrawing them back. But I think this is, again, important. I think Dr. Tarif just showed these slide already. So at the end, again, it decreases inflammation, fibrosis, and decreases the cardiac remodeling. That's how it helps in the heart failure. Thank you very much for your time. Thank you very much, sir, for sharing your thoughts on the subject. And if anyone have any questions for our speakers, please, you can ask one by one. My question is that what is the incidence of this mycotic infection in the experience of our experts? Dr. Khalid Saab. As you all know that there is a mycotic infection. Apart from urine complete examination, it's very difficult for female, especially if they are going to gynecologist, and then they have this culture sensitivity and all those. Otherwise, normally, जो हम लोग being physician, हम तो urine complete and culture sensitivity पे ही rely करते हैं. Number is इसमें क्योंकि जो यूरोपियन स्टडी है उसमें तो नंबर इज टू मच, बट हमारे यहाँ उसमें माइकोटिक इन्फेक्शन का इंसिडेंस कंपैरेटिवली कम है. Any reason for that? मेरा ख्याल है कि बीइंग मुस्लिम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन 5 टाइम. और हमारे यहाँ क्योंकि अगर आप यूरोप में कभी आप तो जाते ही रहते हैं, तो वहाँ पे मुस्लिम शावर नहीं है. टर्की तक है, उससे आगे नहीं है. पोर्टवर्ड में करते हैं कि हम सब मुस्लिम शावर यूज करना या लोटा यूज करना पसंद करते हैं, तो वो आपको वहां पे नहीं है. और उनमें क्योंकि देखिए यूरोजेनिटल सिस्टम दोनों साइड बाय साइड है, तो वो दैट इज वन ऑफ द रीजन. तो हमारे यहाँ अल्लाह मियां की तरफ से ये एक प्रोटेक्शन. और इंसिडेंस ऑफ यूटीआई, प्रोफेसर नुमान तारिफ साहब. Again, as mentioned, the incidence is not that high. In one of the study, it was refuted, but in the Danish study, there was a little higher risk of UTI. I think the number was somewhere around 1 to 2% only. लेकिन आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस, I can't say कि मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ना ही हमने कोई डेटा इकट्ठा किया हुआ जिसमें मैं कह सकूं कि 10% है या 3% है. So लेकिन we see and we have seen it, recently also. तो but we'll have to be on the watch out. और मेरा ख्याल है ये आपका अच्छा क्वेश्चन भी है और फूड फॉर थॉट फॉर द रिसर्चर्स कि डेटा वगैरह इकट्ठा करके तो उसको प्रेजेंट करें कि भाई कितने % हमारी अपनी पॉपुलेशन में और इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते. डॉक्टर तैयब, have you seen any increase in cholesterol with its use?
Not necessarily. Most of our patients are already on statin and they are very adequately controlled. So it'll be very difficult for us to decipher out that if there is any significant increase in cholesterol from that. So no, I have not seen any significant clinically worthwhile increase in the cholesterol. So anyone have any more questions? सर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खालिद साहब से सवाल है सर इधर Question can, pardon, I have not. सर newly diagnosed patient 40 years female having HbA1c of 9 can we start from starting treatment this or we can wait for the other products to give them देखिए treatment जो for diabetes and individual options. Always remember you have to, अगर तो हम बात कर रहे हैं गाइडलाइन की, तो गाइडलाइन में तो नंबर 1 पे क्या था? GLP-1 एनालॉग. आप वेदर विक्टोजा दे रहे हैं, लिराग्लूटाइड दे रहे हैं या ट्रोलिसिटी दे रहे हैं, व्हाटसोएवर द ड्रग. उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास SGL2 इनहिबिटर्स एंड देन DDP4 एंड सल्फोनिलुरिया, जो कि पहले हमारे. अब आपने देखना आपका पेशेंट 40 आपने जो किया है, क्या पेशेंट किस, अब पेशेंट आपका आ जाता है एक लेबरर एंड यू स्टार्ट GLP-1, पेशेंट विल नॉट टेक, देन साइड इफेक्ट. सो आपने पेशेंट की ये वेरिएबल इंडिविजुअल पेशेंट को आपने उसकी, आपने एक तो ड्रग की आपने देखनी है ना, एफिकेसी है, कॉस्ट है और सेफ्टी डाटा है. देन एट द सेम टाइम आपने पेशेंट का ये जरूर देखना है कि क्या आपका पेशेंट अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं. यू कैन स्टार्ट विद एनी, लेकिन मेटफॉर्मिन नंबर 1, क्योंकि अब 9 है. तो अगर आप उस तरह से बात करें कि अगर हमने GLP-1 एनालॉग नहीं दे सकते, तो आई वुड गो फॉर इंसुलिन अलोंग विद SGL2 इनहिबिटर्स एंड मेटफॉर्मिन. With that, thank you very much. मेरे सबको हाइपोग्लाइसेमिया खाना दे दो. Thank you. Thank you to the speakers for imparting their knowledge on all of us, and to the audience for being part of today's program. As the master of today's ceremony, I knight you, the audience, as the future knights of the diabetes. Now, I would like to request Mr. Farhan Javed to come on the stage to present the bouquets to our speakers. और अब मैं चाहूंगा कि स्पीकर्स को एक एक करके बुला लें. आजम आप भी आ जाइए. I would like to request Dr. Khalid Mahmood, please come on the stage to receive the bouquet. Please, Dr. Numan Tarif, please come on the stage. And lastly, I would like to request Dr. Tayyib Mahiuddin, please come on the stage. Thank you very much, dear speakers. With this, I formally end this session. May Allah keep us all safe and healthy. Pakistan, Zindabad. Please be seated. We will be distributing the lunch boxes.